ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं क्या दो चेहरे आपके देखने को आते हैं? कहीं एक जगह आप सोहराबुद्दीन शेख या टेररिज्म की सर आप इतनी क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान का चुनाव है कि गुजरात का चुनाव है? क्या हिंदुस्तान में टेररिज्म नहीं है क्या? और आप लोग टेररिज्म की चर्चा करने से डरते क्यों? क्या हिंदुस्तान में और दुनिया में क्या टेररिज्म पर बहस नहीं होनी चाहिए? आप इतने क्यों उनसे डर रहे हो भाई? भारत के लाखों लोग मर रहे हैं, हमारे सेना के जवान मर रहे हैं। दो युद्धों में जितने सेना के जवान मरे उससे ज्यादा जवान आतंकवाद के कारण मरे हैं। बंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। हमारे हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी अयोध्या लखनऊ में बम ब्लास्ट हुआ, कोर्ट के परिसर में बम ब्लास्ट हुआ, और आतंकवाद की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये मैं तो बड़ा हैरान हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? सर लेकिन ये बताएं कि आपने सोनिया गांधी के ऊपर आप क्यों इतने निशाने कस रहे हैं? वो तो चुनाव लड़ने नहीं। Don't you think there's a crisis of modernism when it comes to actually approaching the Ramayana? Do you think these characters need to be recast much more to appeal much more to the modern age? Should they be still wearing golden crowns and long flowing robes? Why can't they be placed much more in a modern setting? That's a misleading question. Myths always have various forms of retelling. And to a certain extent, myths will always be retold in new ways. In fact, the new saga myth might actually be closer to Batman and Spider-Man in its technological perfection. But it has to leave something to the imagination. Okay. You know, this idea of a standardized Brahminic elite Ramayana is a very dangerous trend. Okay, well, we're going to have Indians to leave have it there. hundreds of variations. There is nothing Brahminic. You're propagating a Brahminical upper caste not. Ramayana. Ram was not a Brahmin for that matter. Okay, Therefore, but we're it's going to have very to difficult to extend it to such a thing. But as far as things are concerned, when a particular item is being produced, when you create something, you have to relate to the particular aspect of which the time dates back. So you cannot have a Ram or a Sita looking at the watch and deciding the timings of all well, these some things. might say that goes These against the things creative cannot be done. imagination. Right, well, Nitish Bharadwaj, Shiv Vishwanathan, Sheshadri, thanks very much. During the Kargil war, the highest number of donations for the war came from Gujarat. Pragmatic, business-minded Gujaratis like to fight proxy wars. They don't actually fight. There are few Gujaratis in the army. Instead, they pay others to fight for them.